Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? I hope you are all fine at your homes. Today we are going to read English unit number 6, Valuing Others. After completing this unit, you will be able to use appropriate expressions in conversation and show ability in ability. Identify and differentiate the use of the with words starting with consonant and vowels. Recognize the compound words and recognize and locate some compound words from various texts and use of common and proper noun and use of verb do, be, do and have as a main and helping verb. Use punctuation. So let's start from this picture. Uh, let's start to read the conversation between these two children. What made you sad? The girl said, what made you sad? And the boy said, I am not like others. And he was thinking about the other children and her himself. And the girl said, yes, you are. Allah subhanahu wa ta'ala made you special because you are a math genius. Dear student, let's talk. What do you think about Faraz disappointment? कि फराज डिसअपॉइंट क्यों है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? Does he need to be disappointed? I don't think so. He need to be disappointed. What's your point of view about this? So let's start from this chapter and let's start the reading of this chapter. Valuing others. One evening, Rehan found his best friend Saad sitting alone on a bench in a park. He seemed really upset. Rehan asked, what made you sad and gloomy? And Saad said, I am feeling guilty about the rude behavior. And Rehan exclaimed, I don't understand. Can you please explain? And Saad said, I have been rude to one of my classmates who limped while walking. Limped का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि लंगड़ा कर चलना. कि उसने कहा साद ने कहा कि मेरा रूड बिहेवियर था एक स्टूडेंट के साथ जो कि लंगड़ा कर चलता था. आई ऑफन मेड फन ऑफ हिम फॉर दैट. My rudeness grew with time, and being the captain of the team, I was shocked to know that Fraz selected as a wicket-keeper. I completely ignored his good performance and he was unkind to him because of physical issue. जो साद है वो रेहान को बता रहा है कि फराज जो है वो बेस्ट प्लेयर था और उसको एज अ विकेट कीपर सेलेक्ट किया गया था, लेकिन मैं सिर्फ उसकी फ़िज़िकल इशू की वजह से उसके साथ रूड बिहेवियर अपना रखता था. एंड नाउ साद वाज फीलिंग गिल्टी अबाउट हिज बिहेवियर and he said, I am feeling so ashamed at my behavior. I will never be able to forgive myself. And Rehan told him that it was not too late. He told Saad to go to Faraz's house and say sorry for his wrong attitude, and Saad agreed. And they both came to Faraz's house. And Saad apologized to him for his rudeness, and Faraz was a good boy. He forgave and hugged him at once, and they became good friends. Okay, dear students, what do you learn from this story? In my point of view, I think we should treat equally to all of them because all the human beings have different talent and ability to do something. And the post reading is how should we treat a differently able person discuss कि हमें differently able person के साथ कैसे treat करना चाहिए. I think we should treat them equally. And if you meet a differently able person, how will you treat him or her? इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद आंसर करना है कि अगर आप किसी डिफरेंटली एबल पर्सन से मिलते हैं तो आपका उसके साथ क्या बिहेवियर होता है. So let's start from the activities. The first activity is oral communication, learning the sound of the. ये जो हमारा वर्ड है द, इसको हम कभी द भी पढ़ते हैं और कभी दी भी पढ़ते हैं. तो हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि हम इसको दी और द क्यों पढ़ते हैं. When the D comes before a vowel sound, it is pronounced as the, but when it comes before a consonant sound, it is pronounced as the. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा कोई भी वर्ड से पहले हमारा ये द आ जाए और वो हमारा वर्ड जो है वो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, देन हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे. अदरवाइज अगर हमारे उस वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, देन हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, आप इसको देखें. दी ऑरेंज, दी एप्पल्स. तो हम यहाँ पे हमारे वोवल लेटर से ये तमाम वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे. और यहाँ पर जो है हमारे सारे वर्ड जो हैं वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे.
आपका एक टास्क है स्टूडेंट्स कि आपने अपनी बुक रीडिंग में देखना है कहाँ पे दी यूज़ हुआ है और कहाँ पे द यूज़ हुआ है। आपने उसको सर्कल करना है और देखना है कि कहाँ पे उसको रीडिंग करते हुए कि कहाँ पे वो दी यूज़ हुआ है और कहाँ पे द यूज़ हुआ है। Okay, dear students, now move to the next page. The second activity is learning to speak. Read and practice the given dialogue. Dialogue is a conversation between two peoples, two or more than two peoples. The first dialogue is between two students, Faraz and Saad, and they are trying to borrow something. And let's read about this. Faraz, may I borrow your helmet? I need it for tomorrow's match. Saad, of course, but please try to return it soon. Faraz, sure, thank you. तो यहाँ पे जो है वो हेलमेट बोरो करने के लिए जो है वो डायलॉग था। नेक्स्ट डायलॉग है हमारा अस्मारा एंड समरा के बीच में। तो लेट्स रीड अबाउट दिस। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी कंप्लीट माय न्यू पेंटिंग एंड समरा यस श्योर बट आई थिंक यू शुड फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ। अस्मा यू आर राइट आई शुड ट्राई इट एट लीस्ट वंस। समरा आई एम श्योर यू कैन डू इट। अस्मा थैंक यू। Dear students, you will have to read this dialogue with the correct pronunciation. Now move to the next activity, reading comprehension. Answer these questions. Students, you will have to ready the page for the question answer. The first question is, why was Saad sitting sad? Saad was sitting sad because he had made fun of Faraz. The second question is, why did Faraz leave the school? Explain in few sentences. Saad became rude with Faraz. He made fun of him. Even he performed well, so Faraz left the school. The third question is, how did Faraz treat Saad? Faraz forgave Saad and hugged him. Dear students, you will have to write these question answers neatly on your notebooks and done. Now move to the next activity. Read the given sentences and notice the inflectional ending. What is the inflectional ending? Inflectional ending is a letter or a group of letters added to the end of a word to change the form of the words. Some inflectional ending are s, es, ing and ed. जब हम किसी word के last पे es, is और ई डी आई एन जी वगैरह लगा कर उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं देन वो वाली हमारी जो एंडिंग होती है वो इन्फ्लेक्शनल एंडिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फराज गोज़ टू द लाइब्रेरी एवरी डे। गो वर्ड है, गो के साथ हमारा ई और एस यूज़ हुआ है तो ये हमारी ई एस जो है वो इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है, ये हाईलाइटेड किए हुए हैं। यू विल हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली एंड नोटिस द यूज़ ऑफ द इन्फ्लेक्शनल एंडिंग and write those words on your notebooks. Dear students, we will discuss the further activities in the next video. Allah Hafiz.